Okay, all right. So let's start. So, guys, currently the football World Cup is going on. Anyone following? Yes, sir. Who's your favorite team? Sir, Argentina? Okay. So, okay. Did you see the last match, Argentina versus Netherlands? No, sir. Yeah, okay. Uh, I mean, that was a very intense match, and okay, they had like lots of foul, lots of yellow cards. Okay. So basically, in football, if you see, for example, the one, obviously, I mean, the one who has ball, like who is taking the ball towards the goal post, he has like all the attraction, every attention towards him, right? So you must have seen when a player is taking the ball to the goal post, okay? Sometimes other people they try to, like grab him, okay? Just to, tackle him. Okay. So you can notice sometimes people what they do is they use their shoulder to just do like shush, go away. Okay. So that's called like shouldering. Okay. Now in chess also we do the same thing actually. Same shouldering sometimes. That also happens in chess. Okay. So I'll show you what this shouldering is about. Okay. Okay. Let's uh let's start with let's start with this position. Okay. Black to play. Black is going this way. Okay. So you have few options. You can go king B. You can take your king first, then push the pawn, or you can immediately push the pawn. First, let me ask you which one will you do? First, push the pawn or take your king and push the pawn? Sir, take my king. What about others? Sir, take my king and then push the. Okay, that is correct. Sir, Very good. taking the king and then Hmm, pushing my pawn. very good. Okay, and there is a reason behind that. Okay, what the reason will be? Right now, the king is on sixth rank, correct? Yes, So sir. if the king is on sixth rank, if it gets like sometimes rook can cut off the king. Okay, how? Let's say this position, this is white to play. Okay, I'll play rook to h5. So basically, I'm cutting off this line completely. Black cannot black cannot come with the king anymore. So what can black do? Black can only push the pawn, correct? So let's say black push a5. Now we don't need to do anything. We just play king to g7. Okay, nothing, no worries. A4, king to f6. If black waits, okay, we just wait. Let's say black doesn't wait, black push the pawn. We go rook a3, h3, rook a2 and rook a3, and pawn is gone. Okay, so this is called cutting off the king. Okay, but as I said, you can only cut off the king if it's on sixth rank. You can only cut off the fifth rank. Okay, see, similar position, I'll show you something here. The correct move is rook a5. Okay, h4. Let's say I just wait, I don't do anything. H3, then rook a3, h2, pawn's gone. Okay, but the first position was this one. Okay, now let's put the king on g5 and see if we can cut off the fourth rank. Like, is there anything like cutting off the fourth rank? Is there anything? So let's say we play rook to a4.
Black will play h4. Let's say we bring our king. Black will play h3. Let's say we play king d6. Now h2. Now the problem is this pawn is about to promote. Okay. So you like last time what happened? We were going rook a3, attacking the pawn h2, rook h3. But here the pawn is about to promote. You cannot go rook a2 and attack the pawn. Okay. So this is the difference. Why you can cut off the king anytime you want. You can cut off the king, but only when the king is on sixth rank. You can only cut off the fifth rank. That always works. Yes. Toshi want to say something? Sir, why can't we cut off the sixth rank if the king is on seventh? You can also do that. Okay, I mean anything below, yeah, that's more amazing. Okay. But Yes, sir. anything towards this, then yeah, that will not work. But okay, it's a very interesting question. I can put maybe one position like that. 1 second. So let's say this position. So we just go rook a6. This also works. King here, you can cut off. But anything below that is a draw. There is no point in cutting off. Okay. Everyone understood? Can I get a thumbs up? Okay, perfect. 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 I can show you. So now I can show you the position which we were discussing in the beginning. Okay. How we are using FIFA, why we are using the FIFA World Cup example. Okay. So black to play this one. Okay. Now in this position, if we first move, if we play a5, then it's just losing because the king is on sixth rank. White will go and cut off the king. Correct? So we have to first take the king. Now the question I want to ask everyone is, what move will you play? King b5 or king c5? You can take your time, think, and tell me. There is no rush. We can play both the moves. We can play both the moves. Yeah, okay, it's also possible. You can play both. Why not? Sir, Why not? Yeah. king c5. Sorry? King c5. King c5. Okay. Let's do one thing. Let's see both of the moves. Okay. I mean, obviously, we will not play king to a5. Correct. This move just doesn't make any sense. Like you're standing in front of the pawn. So let's see king b5. Okay. Sir, king c5. After king b5, what will white do? Sir, king f7. King f7. Very good. So what will black do? Sir, a5. a5. Okay. What will white do? King e6. Okay. What will black do? So after a4, king to d5. Yes. Okay. Let's again push. Now check. King a4, king c4, and now white is winning. Next move, check. I'll either win the pawn or just checkmate. Correct? Yes, Now, sir. in the beginning position, king c5 is actually correct move. Okay. There is a very small difference, which we might not notice now, but we'll see later. What is that? King f7, a5, king e6, a4, and now this king on c5 is shouldering the king on e6 and not letting it come to d5, like the football players.
Okay. So to go to d5, what I will have to do, and why is it so important? Okay, let's try to understand that. Okay, so in order to go to d5, I'll have to give a check. So guys, rook c8 check. Now white is playing rook c8 check. So we'll go to b4 and white will come to d5. Correct? Okay. So what was the difference with king b5? King f7, push, 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 immediately king to d5. Okay. So now basically, let's go to b4. And now here white has an extra tempo. Okay. But with king c5, king here, a5, king here, rook check. Oh, sorry, a4 first, rook check, and now king b4. So you see, like we went like this, not like straight. Okay. So it's little bit like मतलब हम लोग मतलब थोड़ा ऐसे किंग b4 ही हमें जाना था, बट हम लोगों ने थोड़ा किंग c5 जाके मतलब ट्रैफिक जैम कर दिया। मतलब किंग को अभी तकलीफ हो रही है जल्दी आने में। ओके, if you want to use some practical example. Okay, so this is called shouldering. Okay, now let's see one more example. और एक example देखते हैं, फिर आप लोग थोड़ा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। Okay, this one. Okay, black to play. The pawn is going this way, by the way. ठीक है, आई थिंक मेरा मतलब जो चेस बोर्ड है उसमें आप लोगों को नोटेशन, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट द कोऑर्डिनेट्स, बट बहुत बार लोग मतलब उल्टा बोलते हैं, पॉन को इस तरफ ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पर Sir, पॉन I इस can तरफ see जा the रही है। coordinates. ओके, वेरी नाइस। सो पॉन इज गोइंग दिस वे, ब्लैक टू मूव। फर्स्ट मूव हमें क्या खेलना चाहिए? The king e4. किंग e4 शोल्डर। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये देखते हैं कि वाई किंग, व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन किंग e4 एंड किंग f4। ठीक है, किंग f4, किंग d4, g3, और आई डोंट नो, लेट्स से किंग f3, फिर किंग d3, g3, फिर चेक, किंग g2, किंग e2। ये तो अभी विनिंग हो गया ना, किंग मतलब बहुत पास आ गया। Okay, let's say king h2, just stay here, g2, then king f2. Okay, now what is the difference with like king e4 में क्या हो रहा है? So the king cannot come, I have to give a check first or go rook to g7. तो rook basically यहाँ पर एक tempo अभी waste कर रहा है। Okay, so we'll go king to e4, now king to d4, g3, now king to d3. Okay, एंड यहाँ पर पिछले वाले वेरिएशन में क्या हो रहा था, अगर हम लोग किंग f4 अगर जा रहे थे तो यहाँ पर व्हाइट का मूव था एंड व्हाइट वाज गिविंग अ चेक, फिर किंग लेके व्हाइट जा रहा था, करेक्ट और नॉट? बट यहाँ पर अभी हमारी मूव है, मतलब एंड गेम में एक एक टेम्पो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, so we'll play king to f2. Okay, not g2, because okay, I think g2 is also fine. Yeah, I think g2 is also fine, but okay, let's see king f2. तो चेक। नाउ अगेन हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी हम लोग एक मूवी खेल सकते हैं जिसमें ड्रॉ होगा, एंड दैट इज ऑल्सो शोल्डरिंग। नहीं आने देंगे हम उसको। ओके, अभी अभी ये अभी ड्रॉ हो गया, राइट? किंग अगर e3 आएगा तो g2, रुक इधर, फिर किंग f1, क्वीन। बट यहाँ पर अगर हम शोल्डर अगर नहीं करेंगे इस किंग को, और हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हम किंग g1 कुछ खेलेंगे, तो किंग e2, g2, फिर रुक, किंग h1, फिर किंग f2। ओके, सो
क्या हम लोग समझ पा रहे हैं व्हाट इज शोल्डरिंग और Yes, नॉट? sir. Yes, sir. ओके, गुड. इट्स मतलब actually it's very important in rook endgame. Shouldering is the most important thing. Where should we move the king? मतलब हम लोग शोल्डरिंग कर रहे हैं, दैट डजंट मीन ओके यू हैव टू गो टू किंग टू c1. ओके, यू हैव टू थिंक मे बी, मतलब मे बी मैं आप लोगों के साथ प्रैंक कर रहा हूँ. यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये रुक पॉन है. ओके, तो करेक्ट मूव इज किंग c1. ओके, अगेन शोल्डरिंग. बट अगर आप लोग अगर किंग a1 अगर खेलेंगे देन इमीडिएट लॉस. हाउ? किंग टू c3, a2, रुक h7, या कहीं पर भी यहाँ पर आप जा सकते हो किंग b1 एंड checkmate. Okay, so this is the advantage of, ठीक है, shouldering. Okay, let's try to solve this position. White to play and win. First of all, can we win this? And if yes, then how? So पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि फर्स्ट मूव आप लोग क्या सोच रहे हो? Sir, rook g6. रुक Sir, rook g6. g6. रुक Sir, g6. rook g6. रुक g6. अतिक्ष, आपका क्या मूव है फर्स्ट मूव? Sir, rook g6. रुक g6. ओके, करेक्ट. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइक दिस किंग इज कंप्लीटली कट ऑफ एंड उसमें हम लोगों का मतलब कितना एडवांटेज मिल रहा है. ठीक है, एक बार मतलब ये किंग अगर आ गया इस तरफ तो फिर मतलब हम लोग हार भी सकते हैं मैच, कोई भरोसा नहीं है. ओके, सो रुक g6 आइडिया. Sir, he can't move any of his pawns. Then he will ओके, capture. करेक्ट. एंड आई थिंक नेक्स्ट मूव आप लोग रुक g4 खेल के ये पॉन आप मतलब सिंपली आप कैप्चर कर सकते हो अभी दोनों पॉन. ठीक है, so after rook g6 black will play king to d7. Then what are we going to do? Sir, capturing the pawn. Immediately rook into g3. Sir, rook g4. Rook g4. Okay, तो बेसिकली आप लोग अभी रुक into f4 खेल के रुक g4 खेल के दोनों पॉन लेने के प्लान में हो. ओके, ऑल राइट, I'll go g2. Sir, rook cross g2. ओके, आयुष ये नेक्स्ट वाला मूव आप थोड़ा मत बताओ, मुझे पता है आपका आंसर मिल चुका है. ठीक है, ओके. Okay. So black played after rook into g2. Black played king e6. What should we do now? Sir, rook g5. Who said rook g5? Atiksh? Yes, sir. Uh, Sir, rook g5. correct. Simple. Rook g5. Cut off. King is on 6th rank. We don't need to play rook f2. Let's say king f6. Rook a5. बस आप वेट करो. If black अगर pawn को अगर push करता है then immediately you can just go rook here and take the pawn. Okay, and if black doesn't push the pawn, कोई बात नहीं, मैं तो बोलता हूँ आप एक चक्कर ऐसे लगा लो, फिर एक चक्कर वापस भी लगा लो, फिर आप एक चक्कर यहाँ लगा लो. मतलब इन शॉर्ट आपका जो मर्जी है आप अब वो कर सकते हो अगर ब्लैक अगर पॉन को अगर पुश नहीं करता है. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. ठीक है, लेकिन सच में मतलब गेम्स में आप ऐसे चक्कर मत लगाना, वो 50 मूव हो जाता है फिर ड्रॉ हो जाएगा गेम. ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड.
तो अभी मैं आप लोगों को एक पोजीशन दिखाता हूँ दैट इज अ बिट ऑड। ऑड कैसे? जैसे कि नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने जितने भी पोजीशन मतलब देखा, हम लोग ऐसे ऐसे मतलब कट ऑफ कर रहे थे उसको, करेक्ट? बट ये पॉन यहां पर हुआ करता था, रुक पॉन हुआ करता था वो, ठीक है? और यहां पर ये पॉन नाइट पॉन है। तो पहले आप लोग थोड़ा मतलब आप पोजीशन को आप स्टडी कीजिए एंड मुझे ये बताइए कि ये पॉन अगर नाइट पॉन अगर है, रुक पॉन अगर नहीं है, तो इज इट मतलब क्या ये डिफरेंस है कुछ इसमें? Sir, if white tries to go rook g5, then the black king can go to a5. करेक्ट। ओके, तो ये मतलब ये थोड़ा लाइक ये पॉन थोड़ा मतलब शील्ड जैसा थोड़ा काम कर रहा है, ठीक है? शील्ड, आई डोंट नो, हिंदी में आई थिंक उसको कवच बोलते हैं, कवच, ठीक है? तो इट्स लाइक अ शील्ड। तो यहां पर एग्जैक्टली किंग कट ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है? बट माय क्वेश्चन इज, क्या वाइट यहां पर मतलब फिर भी जीत सकता है? कुछ चांस है आपके पास? यार बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि देखो मतलब अभी ब्लैक अगर ये पॉन अगर पुश करता है देन तो इमीडिएटली लॉस हो गया, करेक्ट और नॉट? Yes, मान sir. लेते हैं ब्लैक ने ये पॉन अगर पुश किया तो आप सीधा बस जाके बैठ जाओ फिफ्थ रैंक में, खत्म, ठीक है? तो ब्लैक पुश नहीं करेगा, ब्लैक पहले किंग को लाएगा यहां तक, फिर पुश करेगा। तो क्या मतलब व्हाइट स्टिल मतलब रुक जी5 के बाद क्या व्हाइट स्टिल जीत रहा है? यहाँ पर हमें थोड़ा मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा सारे मूव्स स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं कैलकुलेशन और विजुअलाइजेशन कैसे होती है यहाँ पर। ओके, सो आई थिंक एवरीवन सेड इट्स अ ड्रॉ, बट only Toshi said that white can win. So we'll be one team, Toshi, you and me, and others, you'll be on one team, okay? So white cannot win. Excuse me, sir. Yes. Sir, I am also saying white winning. Ah, okay, Atish. Okay. So Atish, me, Toshi on one team, Ayush, Darshil, and Akshat on one team. Okay. That means we'll play from white and you play from black. Okay. Okay. So how will you continue? Let's move. Sir, king a6. King a6. Oh, sorry. Is that like your final answer? Sir, king a5. Yeah, I think king a5 makes more sense, right, Darshil? Because you need to bring the king forward quickly. So why go here? Sir, king a6, then b6 can play. No, the pawn is going this way. Okay. Darshil, this pawn is going this way. Okay. All right. So king here. Tushi, what should we do? Toshi, Atish, what should we do? Let's try and bring our king, right? Yes, sir, king to g7. Mm-hmm. Okay. Sir, king to sir a4. Sir, Okay. Yes, sir, Ayush. sir, king to b4. King to b4. I mean, normally I have seen like people don't put the king in front of the pawn so they can go quickly. Sir, but if you go king a4, white's winning. Okay, okay. I'll go king to f6. Sir, king c4. King e5. Sir, b4. Ah, very good. Okay. So Toshi and ethics, actually this position is draw.
Okay, white cannot really win, but white can win if you go king a5, king g7, and king a4. How? King e5, b4, king b3, king. Okay, let's say b2. You just go here, protect this square, king here, king d3, king, and we managed to save that, like not let that pawn run away. Okay, this white can win, but the move which Ayush said, king a5, king g7, king b4. This move looks really like, I mean, very stupid move, right? I mean, who keeps the king in front of the pawn? But also this move, it can go unnoticed very easily. Okay. Main idea, what is the main idea? King f6, king c4, king here, b4, and now what we are doing? Shouldering again. Hmm. Okay. So white will have to go. I don't know. What can white do here? Maybe something like rook g1, b3 again, shouldering, king e4, king c3. This is draw now. Okay. So let's say this position after b4, white goes not rook to g1, white goes rook to g8. Again, b3, shouldering. Okay. Rook check, king, king e4, king c3, king e3, king c2, rook check. Now what is the move? Sir, king d1. d1. Okay. And yeah, king d1, rook again here, king and b2. This is draw. Okay. Do we understand? Shouldering, cutting off everything. Yes, sir. Okay. Very good, Ayush. Finding king b4 is not very easy. Nice. Okay. White to play. Can white win this? Let's say I'll give a check. Sir, king b1. King b3. Sir, a1 is equal to knight. Okay. King c3. Hmm. Black is zugzwang now, I believe, or not. Hmm. So winning, not winning, maybe draw. Both players don't want to play anymore. Quit. Leave the tournament hall. Don't come back. Sir, Yes. sir, sir, rook a2 check, then king a3. King a3 Correct. में Correct. Okay. जैसे कि इस पोजीशन में व्हाइट कैन इजीली विन. रुक h2 चेक, किंग इधर, किंग b3. एक्चुअली ये थियोरेटिकल विन है. यहाँ पर अगर क्वीन करते हो तो चेक मेट, अगर आप नाइट करते हो तो बस एक मूव किंग c3 और फिर जुगजॉन. ठीक है. लेकिन इस पोजीशन में फर्क क्या था? दैट द किंग इज नॉट ऑन b4. सो बेसिकली चेक के बाद व्हाइट का क्या आइडिया है? आप मतलब जैसे कि आपके सामने sir, गाड़ी जा black, रही है. sir, black king a3. यस 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 दर्शल, आई हर्ड यू. सो बेसिकली यहाँ पर आपका आइडिया ये है, चेक देने के बाद किंग अगर नीचे गया तो किंग b3 टू अचीव द आइडिया, द ओनली विनिंग आइडिया. बट ब्लैक अगर किंग a3 अगर जाता है, देन अगेन यहाँ पर फिर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं?
Sir, soldering. Shouldering. Okay. Okay. All right. So everyone understood? No questions. If you have any, ask me. Sir.